हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे विंटेज कॉफ़ी के बारे में। इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत शानदार रिजल्ट्स आए। सेल्स इज़ अप बाय 95% एंड पैट इज़ गॉन अप बाय 125%। 8 करोड़ का पैट होता था, इसका अभी 18 करोड़ हो चुका है एंड सेल्स हैव गॉन अप बाय 95%। तो वेरी गुड एग्जीक्यूशन बाय विंटेज कॉफ़ी। और अभी इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन कॉल भी किया है एंड द कॉन कॉल वॉज वेरी बुलिश। सो व्हाट दे आर सेइंग इज कि अभी एक ब्राउन फील्ड केपेक्स एक्सपेंशन करने वाले हैं। दे विल पुट अबाउट 30-35 करोड़ एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन वो होता है जहाँ की already there is a existing land and there is a structure already existing, तो उसी को वो थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे with the machinery what they need and the capex would be done, so it is very fast and very quick. So यहाँ पर क्या होगा, ये करने के बाद brownfield expansion your capacity is going to double just in just 1 year. ठीक है, तो दे आर सेइंग दे विल डू इट बाय द एंड ऑफ द ईयर एंड देर इज इमेंस डिमांड दे आर सेइंग। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने में ही 70-80% हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विंटेज कॉफी इज डूइंग इज दैट दे आर जस्ट नॉट सेलिंग द कॉफी बीन्स। अभी ये खुद का पैकेट ले रहे हैं। दे यूज्ड टू सेल इट टू other people who used to need this coffee beans, मतलब B2B होता था, दूसरे businesses जो कॉफ़ी का business करते थे, so all these retail chains who needed coffee beans to make coffee, तो they used to sell their coffee beans to them, but now they are going to do their own packaging। खुद का brand होगा, खुद की packaging होगी और ये खुद sell करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, मार्जिन बढ़ जाता है। नाउ देर इज अ स्पेशल FDC कॉफ़ी, ये सल्यूबल कॉफ़ी होती है जिसका हाई मार्जिन है। अब इसका भी एक केपेक्स करने वाले हैं FY27 में। ठीक है, बट दिस विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। तो इस वजह से ये कॉन कॉल में कह रहे थे कि ये थोड़ा बहुत डेट लेंगे। इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, द कंपनी इज डेट फ्री, तो थोड़ा बहुत डेट लेंगे एंड देन दे गोइंग टू मेक दिस FY27 में। तो जैसे ये बन जाता है देर इज इमेंस ग्रोथ एंड दे आर सेइंग विद इन 2-3 मंथ्स दे आर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी ऑलमोस्ट 90-100%। तो यही मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। दे आर नॉट बिल्डिंग द कैपेसिटी कि डिमांड आएगा, डिमांड ऑलरेडी है मार्केट में, इसीलिए दे आर सेइंग दे आर गोइंग टू एक्सपेंड द कैपेसिटी। सो वेरी बुलिश कॉन कॉल एंड इफ यू लुक एट लास्ट 4-5 क्वार्टर्स आप देखोगे कि इट इज ग्रोइंग एट अ इमेंस स्पीड, मतलब 70-80% के केगर पे बढ़ रहा है एंड देयर इज इमेंस डिमांड एंड देन बिजनेस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंड इट इज ग्रोइंग। और मैनेजमेंट भी बहुत ट्रांसपेरेंट है, हर बार जो उन्होंने बताया है वैसे ही किया है, तो इससे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। पहली बार कॉन कॉल भी कर रहे हैं, तो जब भी कोई कॉन कॉल करता है दे वांट टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, दे वांट टू आंसर द इन्वेस्टर्स एंड टेल द वर्ल्ड दैट व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा विंटेज कॉफी का सुनकर एंड आई थिंक द काइंड ऑफ कॉन कॉल व्हाट दे हैव सेड, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 70-80% का ग्रोथ। 2 साल में अगर 70-80% का ग्रोथ आ जाता है, आई थिंक द स्टॉक कैन easily triple from here, and it could be even more। तो और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बट स्टे डाइवर्सिफाइड, यू डोंट पुट ऑल योर मनी इन विंटेज कॉफी, बट whoever is having investments in this, I think you're going to reap a lot। और ऐसे ही एक मल्टी बैगर बनता है। यू डोंट गो आउट टू सर्चिंग फॉर मल्टी बैगर्स, you follow the process and you bet your money when things are looking very good, you buy a product which has got immense demand। और विंटेज कॉफी सब कुछ सही कर रहा है एंड आई थिंक there is nothing to worry about and a good business indeed। एंड मुझे लगता है कि कॉफ़ी का डिमांड तो बढ़ ही रहा है, हैबिट्स भी चेंज हो रही है। इन इंडिया ऑल्सो विल फाइंड अ लॉट ऑफ कैफेज ओपनिंग अप। ठीक है, और प्रीमियम कॉफ़ी मिलती है। रिसेंटली आई कुड विजिट अ कैफे हियर इन पैंजिम, दैट इज गोवा, लेकिन यहाँ पर भी आई विल सी यू गेट कॉफीज वर्थ 450 रुपीज, 500 रुपीज इन अ गुड कैफे एंड देयर सो मच ऑफ वैरायटी इन कॉफी and I think that is what is driving here the growth and इट्स ऑल गुड हियर और डिमांड भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि यू शुड कीप ट्रैकिंग दिस कंपनी विंटेज कॉफ़ी, समथिंग दैट शुड बी ऑन योर रडार एंड वेरी हैप्पी विद द कॉन कॉल ऑल्सो। तो यही मुझे शेयर करना था कि आप इसको देखते रहिए और दैट इज़ ऑल। अब मैंने प्री फैब के बारे में भी किया था, Epack Prefab stock के बारे में, a video, and there is a update again that they are going to again do an expansion and by FY27 they are looking to double their capacity। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये डबल करना चाहता है कैपेसिटी का। ऑब्वियसली देयर वाज अ न्यूज़ दैट देयर इज़ अ GST रेट, बट आई थिंक दैट मेक्स नो डिफरेंस। द स्टॉक इज गॉन अप, स्टॉक को ऊपर जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट द बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग। सो दिस GST रेट ऑल्सो कीप हैपनिंग। आई थिंक जहाँ पर ग्रोथ है वहाँ पर GST रेट भी होगा। तो GST रेट होता है तो यू आर नॉट सपोज टू वरी, आई मीन इट ओनली मीन्स दैट योर मनी इज इन द राइट प्लेस। आई थिंक
दैट इज़ हाउ इट इज़। सो प्रीफैब इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। टाइमेक्स का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया, वो भी डिस्कस करना है मुझे। सेल्स आर अप बाय 40% एंड पैट इज़ अप बाय 76%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है यहाँ पे। विंटेज को भी मिला, विंटेज कॉफ़ी को भी मिला, और टाइमैक्स को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। और जब से इन्होंने अनन्या पांडे के साथ दे हैव स्टार्टेड दैट होल थिंग, एंड देन दे हैव स्टार्टेड टू बिल्ड दिस ब्रांड, आई थिंक सेल हैव शॉट अप। और इन्होंने अपने वॉचेस में भी चेंज किया है। So Timex is no longer the old brand, they've become very aggressive and the watches have changed। और ये आप देखोगे कि ये एनालॉग वॉचेस का ट्रेंड वापस आ रहा है। पीपल आर प्रेफरिंग टू बाय मोर एनालॉग वॉचेस। आई थिंक दैट इज व्हाट मेन आर सपोज टू वेयर मोस्टली फॉर बिजनेस मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वाले तो मुझे नहीं लगता दे रियली आर वर्थ। आई मीन दे वर एक्सपेंसिव ऑल्सो सम ऑफ द वॉचेस, बट आई थिंक द ट्रेंड इज चेंजिंग अगेन। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लगता है। एंड आई थिंक Timex is doing something very unreal in the watch space, or I think that will continue, and they have done well for last 3-4 quarters. So there is nothing that makes me doubt them, और मुझे लगता है कि ये और बढ़ता रहेगा। Good set of numbers, and they are expecting that this should last. So let's see, we'll keep tracking another good result. So this season has been very good। ये results का season बहुत अच्छा हुआ है। अभी लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, अगेन बिकॉज ऑफ द टैरिफ इशू दैट इज स्टक, बट दैट शुड नॉट डिटर यू फ्रॉम ट्रैकिंग बिजनेसेस। अगर आपका बिजनेस के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आई थिंक यू विल अल्टीमेटली मेक मनी। सो आई थिंक once that tariff deal is sorted out, I think you will make a lot of money। थोड़ी लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट में, तो आई थिंक द स्टॉक्स विल गो बैक टू द लेवल्स विच दे रियली डिजर्व। सो कीप ट्रैकिंग, आई थिंक हैव पेशेंस एंड कीप रीडिंग। और ऐसे ही करना है, अगर कोई स्टॉक अच्छा नहीं करता तो यू हैव टू पनिश इट, कट द एलोकेशन एंड पुट इट इन द स्टॉक्स दैट गिव यू दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ 30-35% का अगर नहीं है उतने आसपास, तो फिर मुझे नहीं लगता आप कुछ कर भी रहे हो डायरेक्ट एक्टिव इन्वेस्टिंग में, है ना, स्टॉक के। और कम से कम 100 कंपनियां तो आपको ट्रैक करनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे एक्टिव इन्वेस्टिंग। Find someone who can help you out, an experienced investor who can do it for you, who can work along with you। नहीं तो आप खुद भी ट्रैक कर सकते हो। कॉन कॉल्स रीड करना बड़ा ज़रूरी है। यू नीड टू गेट द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। नहीं तो क्या हो जाएगा, स्टॉक बढ़ गया करके आप बेच दोगे फॉर एग्जाम्पल विंटेज का, बट देन समवन हु हैज रेड द कॉन कॉल नोज दैट द एक्सपेंशन इज कमिंग। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। You really play blind when you don't read con calls। I think that is the major डिफरेंस बिटवीन द 1% इन्वेस्टर। ही हैज़ गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और अभी तो ये फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप फिर भी नहीं पढ़ते हो तो इट इज़ ओनली बिकॉज यू आर लेजी। सो आई थिंक गुड सेट ऑफ नंबर्स, एंड आई विल कीप अपडेटिंग। आई थिंक अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव टू बी ट्रैक्ड अगेन। अब सेनोरिस फार्मा का भी रिजल्ट कल आ रहा है। आई थिंक इट हैज़ बीन रिसेंटली लिस्टेड ऑलमोस्ट, अभी मेरे ख्याल से 1 साल हो गया उसको लिस्ट होके। दैट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। आई एम नॉट गिविंग अ रिकमेंडेशन, बट आई think you can look at these ideas। So whatever videos I make, it is for you to go out and search for these kind of stocks। तो जो भी मैं स्टॉक का नाम लेता हूँ ना, उसमें ग्रोथ तो होती है कम से कम। दीज आर नॉट योर HDFC और योर TCS का स्टॉक जिसके अंदर ग्रोथ ही नहीं आता। अभी ऑफ कोर्स दे हैव गिवन ग्रोथ इन द पास्ट, बट इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज वी आर पुटिंग द मनी नाउ। तो हमें तो ग्रोथ आज चाहिए। तो कीप ट्रैकिंग दिस स्टॉक्स, एंड ऑफ कोर्स इफ देयर आर एनी stocks that you know of which have growth, please let me know। My only job is to go out and find as many growth stocks as possible। So इससे I get options, and then of course I can build my portfolio accordingly, and I track a lot of companies. So I think there is almost more options, always more options than the money I can deploy in। But again, a good set of numbers। I think numbers general trend में अच्छे आ रहे हैं this quarter for the Indian companies, and the macro also looks very good for India, and I think just this positive trigger from somewhere, and the markets will start flying again। So thank you everyone for listening, and if you have any suggestions, any comments, you can just put it down there, and keep investing and keep growing and keep reading those con calls। Thank you।